Okay, so beta, last lecture we had started off with the vertex. Did I tell you to find out how the vertex is calculated? No. I think we just discussed the properties of the vertex. Is that right, beta? Yes, sir. Okay, all right. सर बोलो बेटा. सर गुड मॉर्निंग सर. मैंने एक क्वेश्चन भेजा है उसका थोड़ा सा अप्रोच पूछना है आफ्टर द पोजीशन ऑफ 215 की. बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा? हाँ सर, दोनों पे. हाँ ओके बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so let me show you the question here also. This is the one you are talking about, beta? यस सर. ओके, सो बेटा और किसी ने देखा ये सवाल कैसे करेंगे? सर करा तो है सर, सिर्फ एक पॉइंट पूछना था सर इसमें. हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर फर्स्ट सर्कल ट्रांसफर करके वो 0 to 45 की पोजीशन तो आ गई सर. अब सर 0 to 5 पे पोजीशन आने के बाद हम CMG 0 to 45 से मारूंगा मैं, और फिर जो उसका बिल ऑफ पोर्टलैंड का जो सर्कल आ रहा है 2 माइल विजिबिलिटी पे 5.5 माइल का, वो सर हमारे CMG पे जहाँ काटेगा वो 5.25 की पोजीशन होगी. एक मिनट. सो लास्ट साइट स्टार्ट पॉइंट लाइट हाउस 0245 and at 0515 first sites bill of Portland. Current is going to be setting 300 at 2 knots and the strong southerly gale is causing a leeway of 5 degrees. मेरे को तो सर ये था फोर्स एंड स्पीड में को अगर CMG निकालना है सेकंड पोर्शन में तो फिर तो हो गया, पर कुछ और निकालना है, TTS निकालना है तो अलग बात है. नहीं बेटा, आप मुझे बताओ तुम्हारा डाउट क्या है, आस्क मी अगेन. सर जैसे ट्रांसफर पोजीशन सर्कल से पोजीशन आ गई 245 की, वहां से हमारे पास CMG भी आ गया. ओके, वो CMG हमने 245 पे शिफ्ट कर दिया. वो लाइन जहाँ वहाँ काटेगी 5:15 पे फर्स्ट साइटेड पे वो लाइन आ जाएगी, वो सर्किल वहाँ की प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज लेके. हेलो. नो आई डिडंट गेट यू बेटा. अच्छा बेटा सबसे पहले तो 515 की पोजीशन आएगी ना? हाँ, 515 की पोजीशन वो CMG ट्रांसफर करेंगे ना अपन 245 पे. अच्छा सर, ये ऐसे करना है क्या? 245 की पोजीशन आ गई, 245 की पोजीशन हो गई, CMG ट्रांसफर कर दिया, राइट? तो अपने पास 515 की पोजीशन आ गई. बेटा 515 की तो पहले ही आ गई थी ना. अच्छा सर इसको ऐसे करना है क्या? समझ आ गया सर कि अपने स्टार्ट पॉइंट से कोर्स मारा फॉर 2 and 30 आवर्स, ठीक है सर, जितने का ये टाइम है उस पे अपना पोजीशन सर्कल ट्रांसफर करा स्टार्ट पॉइंट वाला विजिबिलिटी, और फिर 5:15 बजे को जो बिल ऑफ पोर्टलैंड का है वो दोनों एक जगह पे कोइंसाइड करेंगे, वो 5:15 की पोजीशन, और फिर वहां से कोर्स मेड गुड बैक मार दिया तो 215 की पोजीशन फर्स्ट वाले सर्कल पे काट देगी. ऐसे ही है ना सर? या एग्जैक्टली बेटा, दैट्स द मेथड. ठीक है सर, हो गया सर, थैंक यू. सर मेरे नहीं समझ में आया, बताना एक बार. ओके बेटा देखो, तुम्हारे पास एक पोजीशन सर्कल है हाँ 0245 पे, हाँ. और फिर तुम्हारे पास एक दूसरा पोजीशन सर्कल है 0515 पे. यस सर. सो इट इज ए सिंपल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल. 245 का जो पोजीशन सर्कल है उसे 515 पे ट्रांसफर कर दो. अच्छा.
हमारे पास CTS है, हमारे पास इंजन स्पीड है, करंट का सेट और रेट है, हमारे पास लीवे है, एवरीथिंग वी रिक्वायर इज देयर। ओके। सो जब आप उसे ट्रांसफर करोगे यू विल गेट द 515 पोजीशन। तो 550 मैं वही पूछ रहा था सर, मैंने जैसे 245 पे अपन ने सर्किल लगाया 1 घंटे का, और जो CMG आया उसमें मैंने पोजीशन सर्किल काटा। बेटा 245 का सर्कल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। आप तो 245 वाला जो स्टार्ट पॉइंट लाइट हाउस है उसी को ट्रांसफ़र करना है ना, वी ट्रांसफ़र द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप अपना CTS और करंट वहाँ पे लगा दो, you get a new point which is the center of your transferred position circle. Draw the transferred position circle. ओके। और जो द कोर्स और स्पीड में कुछ ये वो वाला CMG बेसिकली। They have given us the CTS, they have given us the current and the leeway. So we have to make the course distance and current vector triangle. हाँ, तो मतलब ये जो द कोर्स एंड स्पीड में कुछ पूछा है, ये CMG पूछा है ना, कोर्स वाला जो पूछा है सेकंड क्वेश्चन। हाँ बेटा, course and speed made good is CMG and SMG. ठीक है सर, क्योंकि सर ये मेरा अलग आ रहा था बिल्कुल ही इससे। ठीक है सर, मैं वापस करूँगा। Okay, okay. सर मेरे एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाला हुआ है चार्ट वर्क का, सर उसको एक बार चेक करेंगे, मेरे को इसमें डाउट है, पूछना था आपसे। Okay बेटा। सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, जो फर्स्ट पॉइंट से हमारा एक बेयरिंग आएगा और फिर 6 माइल ऑफ पे जो रहेगा पोर्ट साइड बीम पे, वहां से जो लाइन आएगी, मतलब वो कोर्स मेड गुड होगा या कोर्स टू स्टेयर होगा? बिकॉज अगर उस पे हम करंट लगाएंगे तभी वो कोर्स मेड गुड होगा, बट बुक एक में मिनट, प्रोसीजर दे। let me read out the question. Just a minute. हाँ? ओके। ओके, लेट मी ओपन अप द चार्ट बेटा। इसके लिए चार्ट पे चलते हैं। लेट सर अस ये सी। वो सर ये वो वाला क्वेश्चन है ना, इसमें वो मैथमेटिक ट्रायंगल करना है ना, ट्रिग्नोमेट्री बना के एंगल निकालना है ना। छः हाँ माइल बेटा, 6 माइल लेके फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उससे एंगल मिल जाएगा, फिर उससे मारेंगे कोर्स, राइट सर? हाँ बेटा, लेट्स ओपन अप द चार्ट। ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या बोला और व्हाट इज द थिंग टू बी डन। लेट्स ओपन अप द चार्ट एंड सी। दिस इज विच चार्ट बेटा? 47? वो यस सर। ओके। 90 डिग्री बन के। Just give me 2 minutes, I'll set it up. Huh? ओके सर।
सर ये तो डबल द एंगल वाला है ना? बेटा एक मिनट मुझे चार्ट खोलने दो। नहीं, उसके बाद 45 दे रखा था, वो 90 हो गया, तो उससे भी तो हो जाएगा ये। 90 हो गया तो इंटरनल एंगल ये 45 हो गया, ये वाला अपने पास 90 हो जाएगा, ऊपर वाला 45 हो गया, 6 वैसे ओके। true course to steer to bring the same light beam. Okay, this is Lumbee Island. ओके बेटा, ये देखो अभी तुम्हारे सामने आ रहा है चार्ट एज वेल एज द क्वेश्चन। सो दिस इज इट बेटा, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है and right side we have the chart of the area. So in a position at 2000 hours, a vessel observed Lundy Island South Light bearing 045, distance 6 miles off. So let's plot it here. 045 की bearing है. So this is the light which they are talking about. 045 bearing and the distance is 6 miles off. So approximately I'm taking it somewhere here. This is the fix at 2000 hours. So अब बेटा पहली चीज जो वो बोल रहा है, find the true course to steer to bring the same light abeam on port side at 2030 hours. So पहले तो इस पे दिमाग लगाओ कि how do we find the course to steer to have this light abeam at 2030 hours. सर वो हाफ आवर में जितना चलेगा उसका डिस्टेंस चलेगा उतना डाल के उसका टेंजेंट ड्रॉ cos कर लेंगे। थीटा। सर वो कोई इशू नहीं, वो पोजीशन तो आ जाएगी। 6 माइल सर इस बेरिंग में इशू इसमें आ रहा था कि इसमें जो आएगा वो कोर्स टू स्टीयर होगा या कोर्स नेट गुड होगा, बस ये जो इशू आएगा वो है। सीटीएस पे टेंजेंट मारते हैं और फर्दर उन्होंने करंट दिया है क्वेश्चन में आगे कुछ और। राइट राइट राइट। पर्टिकुलर लेग पे क्यों नहीं लग रहा? ओके ओके बेटा, मैं बाकी सब लोगों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि ये सबके माइंड में क्लियर हो जाए। सो व्हाट यू सेड इज परफेक्टली राइट। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा टेक्निक क्या है कि कैसे हमें ये पता चलेगा। देखो हमारे पास CTS भी नहीं है, अगर CTS नहीं है तो हमें बीम बियरिंग भी पता नहीं चलेगी इसकी। सो वी डोंट हैव एनीथिंग, सो व्हाट टू डू। आप सबसे पहले तो ये देखो कि इसे बीम कब लेके आना है, 2030 पे लेके आना है। दैट मीन्स आफ्टर हाफ एन आवर वी हैव 2000 फिक्स। आधे घंटे के बाद ये लाइट हाउस अबीम होना चाहिए पोर्ट साइड पे। सो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो मेथड है वो आप समझ लो बेटा। मेथड ये है कि जो भी आपकी शिप स्पीड है, इंजन स्पीड, सी इज गिवन यू 10 नॉट्स हियर, शिप स्पीड इज 10 नॉट्स। आप ये पता करो कि हाफ एन आवर में हमारा इंजन डिस्टेंस कितना होगा। सो आवर इंजन डिस्टेंस इन हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी 5 नॉटिकल माइल्स। ओके, 5 नॉटिकल माइल मेरे पास डिस्टेंस आ गया हाफ एन आवर में। मीन्स 2000 पोजीशन से जब मैं चलूँगा तो आधे घंटे में 5 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर रखूँ अपनी कंपस का, आई ओपन इट अप इक्वल टू 5 नॉटिकल माइल्स एंड ड्रॉ ए सर्कल। ये मैंने 5 नॉटिकल माइल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 2000 आवर्स, आई वुड बी समवेयर ऑन दिस सर्कल आफ्टर हाफ एन आवर। मैं इसी सर्कल पे
कहीं ना कहीं हाफ एन आवर के बाद पहुंचूंगा। अप टू हियर ओके बेटा, एवरीबडी ओके? एनी डाउट टू एनीवन अप टू हियर? नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बेटा वो हमें बोल रहा है कि हमें ऐसा कोर्स स्टीयर करना है ताकि ये जो लाइट हाउस है ये हाफ एन आवर के बाद हमारे पोर्ट बीम पे आ जाए। सो लेट अस से मैं ये कोर्स स्टीयर करता हूँ। नाउ इफ आई स्टीयर दिस कोर्स, द शिप रीचेज हियर, ऑब्वियसली माय बीम बियरिंग आर दीज टू। ये लाइट हाउस तो मेरे बीम पे कहीं नहीं आ रहा है। ओके, so how do I find out a course to steer so that the lighthouse comes abeam on my port side? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस लाइट हाउस से जो ये सर्कल आपने बनाया है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, सो एक टेंजेंट यहाँ पे आ गई। यू विल बी एबल टू ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ये सेकेंड टेंजेंट आ गई हमारी। अब ये जो भी हमारे टेंजेंट पॉइंट्स आए हैं, अगर आप इन टेंजेंट पॉइंट्स को अपना टारगेट मान के कोर्स स्टीयर करो, यू विल सी दैट दिस लाइट हाउस विल बी एग्जैक्टली अ बीम। एक केस में ये आपके पोर्ट बीम पे होगा और दूसरे केस में ये आपके स्टारबोर्ड बीम पे होगा। इफ आई पिक अप, लेट अस से दिस इज पॉइंट एक्स, if I pick up this point X and steer a course this way, my ship would be here, and in that case this lighthouse would be abeam on my starboard side. Why it would be abeam? Because जो ये मेरा CTS आया है, let us call it F. Fx is my CTS and let us call it L for lighthouse. Lx is my bearing. Lx is the tangent, Fx is the radius of the circle. Tangent और radius always perpendicular. सो मेरी 4.5 लाइन से जो लाइट हाउस की बियरिंग है वो 90 डिग्री पे होगी, टेलिंग मी दैट दिस लाइट हाउस इज अ बीम। बट इस केस में ये स्टारबोर्ड बीम पे आ रहा है। इफ यू गो ऑन द अदर पॉइंट एंड इफ द शिप कम्स हियर, you will see that the lighthouse comes on your port beam. So ये समझ में आ गया बेटा? up to here everybody okay? यस सर। वेरी गुड। तो हमें ये तो पता चल गया कि लाइट हाउस अभी आना है पोर्ट साइड पे और ये कोर्स हमें स्टीयर करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेशन है वो बाद में आती है। फ्रॉम 2030 पोजीशन, ये आपके पास 2030 की पोजीशन आ गई। फाइंड द जायरो कोर्स एंड द इंजन स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच Bideford pilot station at 22:30 hours, counteracting a current setting 035 at 2 knots. अब उसने आपको आगे कहीं जाने के लिए एक टारगेट दे दिया। In other words, he is given you a CMG. It could be anywhere. I've just taken a particular direction like this. आपको उसने आपका CMG बता दिया है और करंट बता दिया है। Okay, so the current is setting 035 at 2 knots. सो 035 एट 2 नॉट्स, ये मैंने 1 घंटे का करंट यहाँ मार्क किया एंड अपनी इंजन स्पीड को कट कर दिया। सो आई गेट माई CTS वेक्टर लाइक दिस। मैंने करंट को काउंटरएक्ट कर दिया है आगे जाने के लिए। दिस इज़ व्हाट ही रिक्वायर्ड। नाउ फाइंड द जायरो कोर्स टू स्टीयर। जायरो एरर उन्होंने दे रखी है 2 डिग्री हाई। So you find out the CTS, true course to steer, apply the gyro error and find the gyro course to steer. यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया? सर यहीं पे डाउट है सर मेरे को। सर अगर Hold on, just give me a minute. Hold on. Let me complete. फिर मैं आपका पूरा डाउट लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने एक जो चीज़ है ना प्रिंसिपली गलत दी है। वो क्या चीज़ दे रखी है? उन्होंने आपको 2030 ऑनवर्ड्स तो ये करंट बता दिया है, लेकिन 2030 से पहले मींस बिटवीन 2000 टू 2030 यहाँ पे ना तो शुरू में उन्होंने कोई करंट बताया है और ना ही इस मेथड में हम करंट के साथ अबीम लाइट हाउस को लेके आ सकते हैं। जो ये टेक्निक है दैट फ्रॉम ए सर्टेन पोजीशन यू हैव टू स्टीयर ए सर्टेन कोर्स
so that the lighthouse comes abeam. ये बिना करंट के ही किया जा सकता है. अगर यहाँ पे करंट इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हम ये CTS को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे दैट वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट. सो फंडामेंटली ये गलत है कि 2000 से 2030 तक तो कोई करंट नहीं था और 2030 के बाद अब करंट लगना शुरू हो गया है. बट इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जा सकता है. अब मुझे बताओ बेटा डाउट. सर कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया. वेरी गुड. और बताओ बेटा, और किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर. सर इसी के रिगार्डिंग, करंट के रिगार्डिंग इशू आ रहा था कि फर्दर लास्ट में लगा रहे हैं और पहले लगा नहीं रहे. राइट बेटा. सर हाँ बोलो बेटा. सर इस क्वेश्चन को अपन, जैसे ये आपने सर्कल जैसे बताया, इसको मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि अपने पास पहली पोजीशन है 2000 की, 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे. बेटा 45 बियरिंग है, एंगल नहीं है. 45 बेयरिंग है विद रिस्पेक्ट टू वेसल. तो जो ये वाला ट्रायंगल, जो एफ वाला FL जो आपने ट्रायंगल बनाया, दिस एंगल इज 45. नहीं बेटा, एंगल तो ना ये 45 है और ना ये 45 है. ये तो हमें कुछ भी पता नहीं एंगल कितना है, बिकॉज वी डोंट नो द CTS इन द बिगिनिंग. ओके ओके ओके. हमें तो सिर्फ ये बियरिंग पता है कि ये 045 की बियरिंग है. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. सर वो 45 एंगल हाँ के सर, साथ. राइट बेटा. ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया. राइट. और बताओ बेटा, और कोई डाउट? फिर इसमें एक और था, जैसे किताब में था सर ऐसे कि लाइक ये 045 और मतलब लेंडी हाउस पे 045 पे ये 6 माइल्स है और 2000 से 2030 हम चले 5 माइल. राइट. तो सर बेस अपॉन हाइपोटेनस करके हम परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लें कॉस इनवर्स के साथ. एक मिनट बेटा. You mean to say this is 5 miles. 5 Yeah, and this and this 6 miles. 6. Okay. I can calculate this angle by using this. I can calculate the value of this L perpendicular. This is 90 degree. 6 है, ये 5 है. तो 5/6 इक्वल टू cos थीटा, cos इनवर्स आ जाएगा. बेस अपॉन, हाँ राइट बेटा, यू आर राइट. जो एंगल आएगा उसको 45 में ऐड कर दूंगा ये वाला. तो ये Yes. मेरा टोटल को CTS बन जाएगा. राइट बेटा, कैन बी डन दैट वे, यू कैन डू इट. ओके ठीक है सर. पर तुम्हें उसके लिए जब इसको एग्ज़ाम में करोगे तो एक रफ डायग्राम बनानी पड़ेगी आंसर शीट में, टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर हाउ डिड यू फाइंड आउट थीटा. हाँ सर ठीक है. ओके. वैसे भी कर सर सकते हो. इसमें और उसमें सिर्फ सर ये की फर्क है कि टेंजेंट कभी कभी सर्कल के थोड़ा ज्यादा एरिया पे टच करके जाती है, तो वो मतलब आगे से भी ज्वाइन किया जा सकता है, थोड़ा सा पीछे से भी. राइट. तो सर वो 1-2 डिग्री का ही होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है, 1-2 डिग्री का ही होता है सिर्फ. Yeah, that's right. You will get a very accurate CTS using the trigonometry cos theta यूज़ करके आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपना CTS मिलेगा. बट इस केस में बेटा मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इन MMD एग्ज़ाम यू यूज़ द सर्कल मेकिंग मेथड, बिकॉज इस मेथड की एडवांटेज ये है कि एग्जामिनर को प्लॉट देखते ही पता चल जाता है कि आपने कैसे इसका आंसर निकाला है, आपकी वर्किंग क्या है. ही इमीडिएटली कम्स टू नो. ठीक है सर ठीक है. So, ये जल्दी भी अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से करोगे तो आपका सारा काम आंसर शीट पे होगा. You will not have anything plotted on the chart for this first part. So he may have this thing at the back of his mind कि ये कहीं से ना आपने पिक कर लिया है आगे पीछे से. So to avoid that confusion, it is better to draw the circle. ठीक है सर. ओके. पर वो तुम सही बोल रहे हो बेटा, सर्कल में यू आर राइट. कभी कभी जो है ये जो टेंजेंट है ना, दिस लाइट हाउस इज क्वाइट क्लोज टू द सर्कमफ्रेंस, सो द टेंजेंट could give you an error in plotting. So yes, it would be certainly better कि आप cos थीटा से ये एंगल निकाल लो. वो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल मार देंगे कैलकुलेटर से निकाल के उतने डिग्री का कोर्स मार. राइट.
सो आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल गया और आपने चार्ट पे सर्कल भी दिखा दिया. सो बोथ वेज यू आर ऑन द करेक्ट साइड नाउ. ओके सर, ओके. Okay, I would recommend doing that. It is not going to take much time. ठीक है, हाँ बेटर. Okay. और बताओ बेटा. Okay, all right. So चलें बेटा आगे. सर. हाँ बोलो जी. सर अभी जो इसने बोला चेतन ने, अगर मैं जैसे ऐसे कैलकुलेशन मार रहा था, 5 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 0.83 आता है. राइट. और इसका कॉस इनवर्स करोगे तो 33 आएगा. राइट. तो 33 का मतलब ये डिस्टेंस कैसे आ जाएगा सर? बेटा 33 आ गया एंगल, ये 33. हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 33 है. Okay. ठीक है. So 078 078 is your initial course. ठीक है सर ठीक है. Right. Okay. Okay बेटा. So the doubts sorted out. Everybody comfortable with these solutions बेटा? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं. दीज आर टिपिकल क्वेश्चन विच समटाइम अपीयर एंड कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है इनमें, बट ट्रिग्नोमेट्री और ये रियलिस्टिक क्वेश्चंस भी नहीं है. ऐसा कभी नहीं होता शिप पे कि आपको अपना CTS निकालना पड़े. ओके, सो CTS इज ऑलरेडी नोन टू यू, बट कभी कभी जो है पेपर सेटर्स जो क्वेश्चंस बनाते हैं, they try to make the question interesting by involving trigonometry and all. So ये उस टाइप के questions हैं. But good you brought it to the class, so everybody knows now how the question is to be solved. Who brought it, Sachin? Yes sir. Yeah, good beta, good. Thank you Okay. sir. Okay, so आगे चलें बेटा. हम लोग ग्रेट सर्कल सेलिंग कर रहे थे, एंड आफ्टर डूइंग द बेसिक ग्रेट सर्कल सेलिंग क्वेश्चन, डिड यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा? आर यू गेटिंग आंसर्स? यस सर. Very good. So let us now go into the concept of vertex. हमने एक बेसिक ग्रेट सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हमने ग्रेट सर्कल डिस्टेंसेस निकाले हैं, इनिशियल और फाइनल कोर्सेज निकाले हैं. नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस इज टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पोजीशंस. सो इंटरमीडिएट पोजीशंस को हमने फाइंड आउट करना है. क्यों फाइंड आउट करना है? वन, when you make a great circle passage plan, you will need to have intermediate positions for plotting it on your Mercator chart. आप ग्रेट सर्कल ट्रैक को मर्केटर चार्ट पे प्लॉट नहीं कर पाओगे. आपको इंटरमीडिएट पोजीशन निकालनी पड़ेंगी और उनको आप रम लाइन कोर्सेज के साथ ज्वाइन करोगे. सो व्हाट यू एक्चुअली फॉलो इज ए सीरीज ऑफ रम लाइन कोर्सेज, नॉट ए ग्रेट सर्कल कर्व्ड ट्रैक. अगर एक्डिस हो तो ये काम आसान हो जाता है. अगर नमोनिक चार्ट हो हमारे पास शिप पे तो भी ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है. बट अगर ये दोनों ना हो तो उस केस में हम अपना दिमाग लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि ये इंटरमीडिएट पोजीशंस क्या होंगी. ओके, सो अब इंटरमीडिएट पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रेट सर्कल का वर्टेक्स पता होना चाहिए. We should know the latitude and longitude of the vertex. So ये हमारा अगला टारगेट है, how to find out the position of the vertex. So I'm going to revise the concept which we did earlier and emphasize on important points so that you can note them down in your notebook, जो हमें आगे काम में आएंगे. So let me set up the video and we move on to finding the vertex. वर्टेक्स को जब हम फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए हमें नेपियर्स रूल्स को यूज़ करना पड़ेगा. सो वी विल अंडरस्टैंड द नेपियर रूल्स ऑल्सो, एंड या लेट्स कंटिन्यू एंड सी हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वर्टेक्स यूजिंग द नेपियर्स रूल. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल सेट अप द
video. We start our discussion by understanding as to what does vertex mean. Let us take any great circle on the surface of the earth. Beta, is the video audio going fine? Yes, sir. Okay. We see in the diagram the sphere of the earth showing up. We have the poles of the earth coming up on the diagram, followed by equator. And now we take any great circle except the equator. So equator has been left out of our discussion currently. So we take any other great circle. You can see an orange great circle showing up in the diagram. And we consider randomly points on it marked from A to H. So you can see these points also randomly showing up on the great circle drawn on the surface of the earth. Now, if a vessel moves along this great circle, starting from A, along the direction of the arrows which are coming up on the screen, so she goes right round this great circle and returns back to point A. What do we see as the vessel sails along this great circle? We see that at each point, the vessel has a different course. Why? Because the great circle track cuts the meridian at each point at a different angle. Also, the coordinate of each point along the great circle, that is their latitude and longitude, are different. And what do we see as far as coordinates are concerned? That of all the points along the great circle, point D is the point where the vessel shall reach the highest northerly latitude. And likewise, point H would be the point where the vessel shall reach the highest southerly latitude. These 2 points, D and H, where the great circle has the highest latitude, or the points having the highest latitude along the great circle, are the points referred to as the vertices of the great circle. So D and H are the vertices of the great circle. So based on the explanation of the vertex of a GC is a point at which the GC reaches the highest or maximum latitude. In other words, these are the points on the great circle which are closest to the poles.
Okay, so beta, this is the definition of the vertex. The vertex of a great circle is the point at which the great circle reaches the highest or maximum latitude. So just make a note of this definition. If you want, you can write it in your notebooks. That is the first thing for vertex, or you can take a screenshot. Keep it with you. Just let me know once you are done. Done, sir. Okay, very good. Now, based on this discussion, let's evaluate as to where are the vertices of the meridian. We know all meridians run north-south. Their highest latitude are the geographical poles. Therefore, vertices of every meridian happen to be the North Pole and the South Pole. Where are the vertices of the equator? Now, if you recall, when we started our discussion on vertex, we had left out equator. Why? Because equator is a very special great circle which runs in the east-west direction, and latitude of every point along the equator is 0 degrees. So therefore, the concept of vertex shall not apply to equator. Why? Because the latitudes are measured with respect to equator itself. Now, having understood what vertex means, let us understand some of the features of the vertex which will help us in solving certain questions. Okay, beta. Any doubt up to this point, beta? Up to here, any doubt in your mind? No, sir. No, sir. Okay, very good, beta. ये हमने पिछली बार भी कर लिया था, but I'm just repeating it to emphasize on the important points. Now, every great circle, of course, excepting equator, has two vertices that are diametrically opposite to each other and one located in each of the hemispheres. With respect to this great circle in question here, we can see it has two vertices, vertex D and vertex H, diametrically opposite to each other, vertex D in the northern hemisphere and vertex H in the southern hemisphere. At the vertex, the great circle track is exactly east-west, and the other way of saying the same thing is that the great circle course of the ship at the vertices is east or west. That means it does not have any northerly or southerly component. Now, beta, this is a very, very important property of the vertex, that when the great circle track reaches the vertex, the track is exactly east-west. The orientation of the great circle track is exactly east-west. Or in other words, you can say that the track lies in 090 and 270 direction. So it means that either the course of the ship would be 090 or 270 when it reaches the vertex of a great circle track. So this is a very, very important property, and we will be using it as we go further into the calculation of vertex. So just note this also down, beta. At the vertex, the GC track is exactly east-west. That is, the vessel's GC course at vertex is 090 or 270. Just note this down and let me know.
Done, beta. Noted. Yes, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. Okay, beta. Let's proceed ahead now. Now, to understand this, let's have a look at the highlighter moving along this great circle track, and we can see as it is moving along the great circle track, the northerly latitude is increasing. And we all know that this increase in northerly latitude is because of a northerly component in the course. And of course, this northerly component is continuously changing. What do we see as the vessel goes past point D, that is the vertex? The vessel's northerly latitude starts decreasing. Now, we also know that if the northerly latitude has started decreasing, the course must be now having a southerly component. Therefore, the vessel, as it was moving along here, the track here, had a northerly component of the course, then it has the southerly component. So somewhere this change has taken place, and the place or the point where the change takes place is point D, where the northerly component was continuously decreasing, becoming zero at the vertex before the southerly component sets in. So at the vertex, there is no northerly component of the course, there is no southerly component of the course. Therefore, the vessel's course will be either east or west. As the vessel is always aligned along the great circle, therefore, it also means that the great circle track at the vertex or the vertices is running in the east-west direction. The vertices will be located with a D long of 090 degrees from the positions where the great circle cuts the equator. Now, this great circle is cutting the equator at point P and point F. Vertices are D and H. That means D long between B and D is 90, D and F is 90, F and H is 90, H and B is 90. It's very simple to understand that. If a vessel starts from B, goes along the great circle track, and comes back to point B, the D long is 360 degrees. Now, these points, that is point B, D, F, H, B, they divide the great circle into 4 quadrants. And now, since all these 4 parts are equal, being the quadrants of the great circle, so if along the entire great circle, the D long was 360 degrees, then the D long for each quadrant shall be 1/4 of it, that is 90 degrees. Beta, any doubt in the mind up to here? No, sir. Okay, great. So let's take a pause here. We are almost done for our first session. So let's take a break, and after the break, we continue. See you after the break. Huh?
Okay, beta, welcome back. Shall we continue? Yes, sir. Okay. Okay, so two important things we saw in vertex beta. One was it is the highest latitude at which the great circle track reaches. Two vertices for every great circle, one in the north hemisphere, other in the southern hemisphere. And very important property, at the vertex, the GC track is exactly east-west. That is, the vessel's course at vertex will be 090 or 270. So now proceeding ahead. The latitude of the vertices will be equal to the inclination between the plane of equator and the plane of the great circle, or the angle at which a great circle cuts the equator represents the latitude of the vertex. So first, let us identify the angle between the planes of the equator and the great circle. This is the angle in our case, which is the angle of inclination between the plane of this great circle and the plane of equator. Now, if we join this point D with the center of the earth with a straight line, I'm sure we can all visualize that this particular line shall be in the plane of the great circle. So if this line is going to be in the plane of this great circle, then this line shall make the same angle as this one with the plane of equator. And we all know that the angle subtended by a point on the surface of the earth with the plane of equator at the center of the earth represents its latitude. Therefore, this angle of inclination becomes the latitude of the vertex. The great circle track intersects the meridian of the vertex at 90 degrees angle. This issue has already been addressed when we inferred that the course of the vessel at the vertices would be east or west, or the great circle track shall be east or west at the vertices. And we know these directions are measured from true north, and north-south is represented by the meridian. Therefore, the angle between the meridian and the great circle at the vertices shall be 90 degrees. A vessel's track may or may not pass through the vertex of the great circle. Of course, the entire great circle has only two vertices. We may be traveling only over a part of the great circle track. So it may include the vertex or it may not include the vertex. For example, if I travel along this great circle from B to C, then over this arc, I do not include any of the vertices. But if the great circle, if I have to travel from C to E, then I shall be passing through vertex D. So my track may include a vertex or may not include a vertex. In our calculation, we shall be dealing with the vertex that is closer to our great circle track. So if it lies within the track, obviously that's the closest one. If it does not lie within the track, then our interest would be in the vertex that is closer to our track. Okay, so beta, any doubt in any of the points? No, sir. Now, one very, very important thing to understand is, you see this point number 2, that is the great circle track intersects the meridian of the vertex at 90-degree angle. This is very easy to understand. We just now saw and wrote down
that at the vertex, the great circle track lies in the east-west direction, 090270 direction. And we know that the meridians, all the meridians, whichever place it is, all the meridians, they run in the north-south direction, 000 and 180. So if the meridian is running north-south and the great circle track is running east-west at the vertex, that means the angle between them should always be 90 degrees. So this is also a very, very important point. Number 2, the great circle track intersects the meridian of the vertex at 90-degree angle. This is clear to everyone, beta? Any doubts? Very good. Now the next important thing, a vessel's great circle track may or may not pass through the vertex. Or you can say the vertex may or may not lie between your initial and final positions. Let us say you are at a port Bravo. There was a port at the equator at right now where the ship is, and you get instructions to go to a port Charlie, C point. Now, when you go from Bravo to Charlie, you see between B and C, Bravo and Charlie, between these two positions, there is no vertex. So when you are going from B to C, the vertex does not lie between the initial and final positions. The vertex is outside, the vertex is at delta. So vertex will not lie between the initial and final positions in this case. Now, as you started proceeding from Bravo and you were somewhere midway, the company changed its voyage instructions. They said, no, don't approach to C. Now you go up to Point Eco. Point Eco, Eco port is your destination. Now, if you are going from Bravo to Eco, then this vertex lies in between your initial and final positions. So you should always remember the vertex in some cases may lie between the initial and final positions, and in other case it may not be between the initial and final position. Now this is a very, very important thing which we need to know for finding the position of the vertex. We need to know beforehand, before we do the vertex calculation, that whether it lies between our initial and final positions or it lies outside our initial and final positions. So I will tell you a shortcut method how to find out whether the vertex lies inside or the vertex lies outside. So this is an important thing which we need to know before we go into the vertex calculations. So is this clear beta up to here? Any doubts? No, sir. सर एक बात पूछनी थी बोलो बेटा. सर एट एनी पॉइंट एक पॉइंट पे मोर देन वन जीसी पास कर सकता है सर ग्रेट सर्कल Between any two positions beta or at a no single any point? particular point sir let's say at this diagram at C point more than one GC can pass Yeah, certainly beta, because you so see, to give ये you, सर एक नोट से भी आ सकता है नोट साउथ से भी एक जीसी बन सकता है सर right, if you draw the meridian of point C, it will be a करेक्ट GC. It will pass from the North Pole, C point and the South Pole. तो फिर सर उसका तो वर्टेक्स डिफरेंट होगा ना उसकी सारी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी यस बेटा, बिल्कुल. दो अलग अलग ग्रेट सर्कल होगा, ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग होंगी, वर्टेक्स भी अलग होंगे. तो हमें कैसे पता चलेगा सर हमें कौन सा चूज करना है या कैसे ओके बेटा, हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें कौन सा वर्टेक्स चाहिए, बिकॉज हमें सी पॉइंट के साथ वो हमारी इनिशियल या फाइनल एक और पोजीशन देंगे. You want to consider C as your starting position or destination? ओके विद रिस्पेक्ट टू हमारी पहली दो पोजीशंस के रिस्पेक्ट हमें पता चल सकता है Right. जो भी सेकेंड पोजीशन उन्होंने हमें दी होगी, let us say they have given B. तो जैसे ही वो हमें B पोजीशन देते हैं, now between B and C, there can be only one great circle, only one. करेक्ट अंडरस्टूड सर Okay.
ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट्स अभी तक? और सर एक वर्टेक्स पे आपने बोला था कि वो ईस्ट और वेस्ट होगा कोर्स, एक बार वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे सर? ओके बेटा, इमेजिन करो कि कोई शिप हमारा पॉइंट बी पे है एंड इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी। नाउ कैन यू विजुअलाइज एंड टेल मी कि बी पॉइंट पे जो ये शिप है हमारा, इसका कोर्स क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट होगा सर अपनी। वेरी गुड। टेक एनी हाइपोथेटिकल वैल्यू बेटा, कोई भी वैल्यू लेट्स ले से लो। 40, लेट्स से 40। 040। सो ब्रेवो पॉइंट पे हमारा जो कोर्स है वो 040 है, और हमारा शिप प्रोसीड कर रहा है अब सी की तरफ। अब आप देखो बेटा, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं, हम डेल्टा पॉइंट पे पहुंचेंगे। आवर कोर्स इज नॉर्थ ईस्ट एंड आवर लैटिट्यूड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ आफ्टर डेल्टा पॉइंट हमारा लैटिट्यूड डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा पॉइंट को क्रॉस करने के बाद हमारा कोर्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साउथ वेस्ट समवेयर। साउथ ईस्ट बेटा, रहेगा तो ईस्ट ही। हाँ साउथ। राइट। सो आप देखो, डेल्टा पॉइंट से पहले हमारा कोर्स था नॉर्थ ईस्ट, डेल्टा पॉइंट के बाद ये हो गया साउथ ईस्ट। तो एट पॉइंट डी हमारा कोर्स क्या होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पूरा ईस्टर्ली, ईस्ट हमारा ऊपर साइड हो जाएगा पूरा, इधर विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्ली हो जाएगा सर। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, डेल्टा पॉइंट पे हमारा कोर्स ईस्टर्ली हो जाएगा, 090, इफ़ यू आर मूविंग इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन। अगर आप उल्टा चल रहे हो तो वेस्टर्ली हो जाएगा, विच एवर वे यू कैन इमेजिन। बट इन बोथ दीज कंडीशंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेट सर्कल ट्रैक विल बी ईस्ट वेस्ट। ठीक है सर, क्लियर। ओके। क्लियर सर। ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट अभी तक? ओके, सो टेक अवेज अभी तक हमने जो किया यहाँ पे, वन, वी नो द great circle track at the vertex lies east west and it cuts the meridian at 90-degree angle, meridian of the vertex. Second, when you go from initial position to final position, vertex may lie inside your initial final positions or may lie outside your initial and final positions. And to know the position of the vertex, it is a very important thing to know beforehand whether vertex lies inside or the vertex lies outside. So let's now proceed ahead. Okay, now beta, as I told you that GC sailing में पहले हमने एक बेसिक ग्रेट सर्कल सेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसमें हमने ग्रेट सर्कल डिस्टेंस और एंगल ए एंगल बी को फाइंड आउट किया. नाउ फॉर वर्टेक्स द बेसिक कैलकुलेशन हैज़ टू बी डन. जो ये जीसी डिस्टेंस की और एंगल ए और एंगल बी की कैलकुलेशन है, ये तो हमें पहले करनी ही पड़ेगी. नाउ वंस यू डू दैट कैलकुलेशन, आफ्टर दैट वी विल solve it for the position of the vertex. तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड वेदर द वर्टेक्स लाइज इनसाइड द ट्राइंगल और आउटसाइड द ट्राइंगल, ये कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए हम लोग एंगल ए और एंगल बी को यूज़ करेंगे, जो हमने नॉर्मल जीसी क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे. रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स, नॉट कोर्सेस. हमें ट्राइंगल के एंगल्स को देखना है, कोर्सेज को नहीं देखना है. सो लेट अस सी, यूजिंग दीज एंगल्स, how can we find out whether vertex is inside or outside?
सर आवाज नहीं आ रही सर. No sound, beta? No sound sir. Yes, sir. Okay. No sound. Oh, okay, No okay. sound. Hold on, hold on. There is some issue then. Let me check it. To figure out whether the vertex of the great circle lies within the GC track of the vessel or it Now it's lies. coming, sir. Now, okay, beta? Yes, sir. Okay, sir. Now. Okay, हाँ beta. yes sir अभी आ रही है. Okay, beta. Okay. So I'm continuing. The GC track, we use angles A and B of the PAB triangle. We calculate the angles A and B, and if angle A and B are both acute, that is both are less than 90 degrees, then the vertex lies inside the track, that means between A and B somewhere. Let's look at it through a diagram. We have the pole, we have position A, position B. We draw the meridians of both the positions. We join them with the arc of a great circle, so we have a PAB triangle. We solve it. We have already learned in volume 1 of this series on great circle how to solve for angle A and B. And if angle A and B are found to be both acute, the vertex shall lie between somewhere between A and B. So we can take any point along this where we feel appropriate, represent that by V as the vertex. We draw the meridian of this vertex from P, and we have already seen in the features of the great circle that this meridian shall cut the great circle at 90 degrees at the vertex. So this angle is 90. However, So this is clear, beta? Up to here? Yes, sir. Okay, so this was the first statement, that if both the angles are acute, acute means both of them are less than 90 degrees, the vertex will lie inside the PAB triangle, or you can say vertex will lie in between initial and final positions. Yes sir. Okay, all right, let's proceed ahead now. on solving for angles A and B of the PAB triangle, if we find that any one angle happens to be acute and the other one obtuse, then the vertex shall lie outside the track and it shall lie on the side of the obtuse angle. Let's look at this through a diagram. Here is the pole, here is angle position A, position B, their meridians joined by a great circle track. PAB triangle solved for angle A and B, angle A found to be acute, but angle B found to be obtuse. Now in this case, the vertex shall not lie on the track between AB. It shall be outside the track, and the closer one shall be on this side of the great circle, that means towards the obtuse angle. So we mark a point somewhere here. बोलो बेटा. सर ये जो फर्स्ट वाला है, इफ इन बोथ एंगल्स ए एंड बी आर एक्यूट, सर फिर जो वर्टेक्स है वो मतलब कौन से वाले एंगल की साइड, लाइक ए वाली की साइड ज्यादा टुवर्ड्स होगी या बी वाली की साइड, जो बड़ा होगा उसकी टुवर्ड्स? ओके बेटा, वैसे हमें ये चीज चाहिए नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें ये चाहिए नहीं. सो लेट्स लीव इट फॉर द टाइम बीइंग. अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो, वी विल नॉट रिक्वायर इट. ओके सर. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वर्टेक्स अंदर बन रहा है. सो उतना अगर पता चल जाएगा तो हम वर्टेक्स की पोजीशन निकाल पाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. As vertex. So here is vertex with draw its meridian through the pole. Needless to say, it will make an angle of 90 degrees with the great circle. Now, having identified whether the vertex lies inside the track or outside the track, what do we use it for? So the second case is also clear, beta. One angle is obtuse.
the vertex will lie outside the triangle and towards the obtuse angle. Any doubts up to here? Okay, great. What is our interest in the vertex that we have discussed it for so long? Now, the importance of vertex lies is in the fact that the vertex, the meridian of the vertex, cuts the great circle at 90 degrees. So this angle at the vertex between the GC track and the meridian of the vertex is 90 degrees is a very, very important feature. Why? Because this gives us special spherical triangle, which is called as right-angled spherical triangle. And such triangles can be much more conveniently solved using Napier's rule. So बेटा नेपियर रूल याद है जो सेकंड मेट में और प्रीसी में किए थे या भूल गए? ओके ऑल राइट, ब्रशअप हो जाएगा तो याद आ जाएगा। ओके बेटा ऑल राइट। याद होता था या तो क्लॉकवाइज घूमना होता था या जिस साइड से स्टार्ट करो उसी साइड घूमना था। -90 PV -90 V -90 ऐसे करते थे कुछ से। Okay, all right. Let us see. We'll remember now. Let us refresh the Napier's rule because vertex को solve करने के लिए हम Napier's rule apply करेंगे. Now Napier's, हाँ बोलो बेटा। सर कभी जैसे इनिशियल एंगल सेकेंडरी एंगल से बड़ा हो जाए, जैसे ए एंगल आपका 120 हो, फिर जो बी वाला एंगल है वो कम हो जाए, तो इस तरफ आ जाएगा ये वर्टेक्स? या जो तुम बोल रहे हो सही है बेटा। ठीक है सर। जो भी एंगल बड़ा होगा, ओके, whichever is obtuse greater than 90, vertex उसी तरफ आएगा। ठीक है सर। Okay. So we are now going to beta, you can mute your mic. So now we are going to see the application of Napier's rule. हम Napier's rule की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे कि वर्टेक्स की लोकेशन कहाँ पे है, वर्टेक्स का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है. Now Napier rule जो है, it is applicable to special spherical triangle. What do we mean by special? What is the speciality? The speciality is 90 degrees. At least one part of the triangle should be 90 degrees to apply the Napier's rule. ये 90 डिग्री एंगल भी हो सकता है और 90 डिग्री साइड भी हो सकती है. So Napier rule is applicable in both the cases. So let us now refresh what this Napier rule is. Sir, no sound. Okay, gone again. Something with pausing. In understanding of the topic at hand, let's quickly revise the application of Napier's rule to right-angled spherical triangles. To be able to apply Napier's rule, we first draw the triangle. So here is the triangle, point A, point B, point C, all joined by their arcs of great circles. So we have a spherical triangle ABC, which has come up on the screen. Then we identify the angle, which is 90 degrees. Let us say angle B in our case is 90 degrees. So we get ABC as the right-angled spherical triangle, which has 6 parts, 3 angles, 3 sides,
with angle B being 90 degrees. Now we make the Napier's cartwheel. Now to make the Napier's cartwheel, we draw the circle. We divide into 4 parts. The upper one here is divided into 2 through an arrow. The circle is now divided into 5 parts. Here we put down the part which is 90 degrees. So angle B 90 degree comes here. Now we have 5 parts left here in the spherical triangle, and we have 5 parts in the cartwheel. They are all filled in. Now these bigger parts here have the complements of the parts, whereas the smaller ones shall have the parts coming in as it is. What does it mean? We can fill in 90 minus 90 minus 90 minus here. That means here we shall have the complement of the parts. Now from B we can start going clockwise and fill up these parts in the clockwise direction from here like this. So when we go from B to clockwise, we have side BC. Side BC comes here. Then we have angle C. Angle C comes here. Then we have side AC, which comes here. Then we have side angle A, which comes here. And lastly, we have side AB, which shows up here. And that's how this is the cartwheel, which is now completed for the right angled spherical triangle. So याद आ गया बेटा Napier's rule application? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt up to here बेटा? नो सर सर नोट कर रहे थे Say again बेटा. सर नोट कर रहे हैं इसको अच्छा अच्छा कर लो बेटा कर लो. You can note down. हो गया सर Okay बेटा. Now, if you have learned to complete the cartwheel in a different manner, it's perfectly fine. You can continue with that practice as long as the cartwheel is correctly filled in. Having completed the cartwheel, we can apply the Napier's rule. The rules are sine of the middle part is equal to product of the tangent of the adjacent parts. So this is one of the two rules. The other one being sine of the middle part is equal to product of the cosine of the opposite parts. So this is the other one. Depending on the combination, we can choose the rule to apply, use the given two parts and calculate the third one. Of course, the parts involved have to be the ones other than the 90-degree angle. So बेटा ये भी साथ में note कर लो. These are the two formula which we use for Napier rule application. Let me know once you are done. हो गया सर Okay ठीक है बेटा.
And hereafter, we can apply the Napier's rule and complete our calculations. Now we read. ओके बेटा, बिफोर वी गो अहेड, हमने नेपियर रूल की एप्लीकेशन देखी फॉर ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. लेट मी शो द एप्लीकेशन टू यू फॉर ए राइट साइडेड ट्राइंगल ऑल्सो, सो वो भी माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ओपन अप द प्रेजेंटेशन. Okay, so now we have a 90-degree side triangle. It is also known as a right-sided triangle or a quadrantal triangle also. So this 90-degree side is represented by a rectangle made on the side, as you see on the screen. So how do we apply the Napier's rule here? So this is a right-sided spherical triangle. We make the same cartwheel arrangement, the same circle diagram, and we divide it into 5 parts as we did earlier, same 5 parts. Now the difference between a 90-degree angle and a 90-degree side is in the bottommost part. So the bottommost part which you see in this part, now what we do is we write down this 90 after the minus sign. 90 does not come in the beginning, but 90 goes to the end. This is the only difference between application for right angled and right sided triangle. Rest everything is the same. So let us do the other things also now. बाकी के दोनों बड़े वाले पार्ट्स में एज यूजुअल 90 माइनस और 90 माइनस हमने फिलअप कर दिया है. एंड नाउ वी कैन फिल अप द पार्ट्स. जो भी 90 डिग्री वाला पार्ट है, इन दिस केस साइड ए बी, उसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है. And after that we go clockwise in the triangle and in the circle. So after AB, the next part which you have is angle A. So angle A is filled up here. Then the next part which we have is side PA. So you can see PA is filled up here. Next part is angle P. So you can see P is filled up here. Next part is side PB. PB is filled up. Next part is angle B. Angle B is filled up, and you see all the parts are completed. So once you have completed these parts, you have filled up the circular diagram. Now you can apply the Napier's formula. The formula remains the same. Whether it is 90-degree angle or 90-degree side, there is no change in the formula. Formulas are sine of the middle part is equal to tangent adjacent 1 multiplied by tangent adjacent 2. The second one is sine of the middle part is equal to cos opposite 1 into cos of opposite part 2. The formulas remain the same. You can see the formulas here on the screen appearing on the left side now. Now, which is the middle part and which is the opposite part? That is decided by what all information is available to us in this triangle. So let us see how do we identify these middle and opposite parts and how do we apply the formula. Now Napier rule says that if you know any two parts of the triangle other than the 90-degree part, means 90-degree part को अगर हम छोड़ दें, उसको छोड़ के कोई भी और दो पार्ट आपको पता होने चाहिए. And if you know any two parts of this triangle other than the 90-degree one, you can find out anything else.
बाकी के जितने भी मिसिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आप नेपियर रूल से फाइंड आउट कर सकते हो. So the parts which you know could be two angles, it could be two sides, it could be one angle and one side. Any two parts of the triangle should be known to you other than the special part, other than the 90-degree part. So let us take an example. Let us assume that in this particular triangle which we see PAB, we know side PA. I put a tick mark there on side PA, and we know angle P. These two are the known items, side PA and angle P. And we want to find out angle Bravo. So I put a question mark here at angle Bravo. So how do we apply the Napier's rule now? Let us first identify these three parts in the circular diagram. So you can see angle P is the bottommost part of our circular diagram, which is known to us. So we have a tick mark there. Then PA is the part on the right hand side, which is known to us, again a tick mark. And the part which we want to know is Bravo, angle Bravo. So we have put a question mark here. Now out of these three parts, can you tell me which will be the middle part, beta? B, sir. Angle B. Very good. So angle B is going to be the middle part. And what will be the remaining parts? Adjacent or opposite? Opposite, sir. Very good. Since they will be opposite, since they are not sharing any side with the unknown part B, so they will be called as opposite part. So any part touching with the other one is the adjacent part, and any part which is not touching the other part is the opposite part. So which formula are we going to apply here? Sin B is equals to cos P minus 90 into cos 90 minus PA. Very good, beta. So we have the middle part identified. We have two other parts known to us. Now we can apply the formula. So we have to apply the sine of middle part is equal to cos opposite formula. So in this case, you know PA, you know angle P, you put these values on the right hand side, and with a scientific calculator, you will be able to easily find out what is angle B. So this is the application of Napier's rule. So is it clear now, beta? Any doubts up to here? सर मुझे सर ये adjacent और opposite नहीं clear हुआ सर. ओके बेटा, सबसे पहले तो आपने मिडल पार्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो मिडल पार्ट की आइडेंटिफिकेशन हो गई? दैट्स ओके. बेटा मिडिल पार्ट आइडेंटिफिकेशन में तो डाउट नहीं है? Gone. Are you still there? Yes sir, yes sir, I am here sir. हाँ बेटा तो मिडिल मिडिल पार्ट पार्ट सर अपने को P निकालना है ना सर, हमको तो P हो गया ना मिडिल पार्ट से. निकलना चल नहीं बेटा, नहीं, मिडिल पार्ट वो नहीं है जो हमने निकालना है. मिडिल पार्ट तो हमें जब तीनों पार्ट्स को यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद पता चलेगा. अब लेट अस से कि इन तीनों में से आप किसी और पार्ट को मिडिल पार्ट लेना चाहते हो. लेट अस से यू वांट टू पिक P minus 90 एज द मिडिल पार्ट. ओके, अब अगर इसे मिडिल पार्ट पिक करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? मुझे बताओ बेटा, ये जो 90 माइनस पी ए है, ये P माइनस 90 के एडजेसेंट है या ऑपोजिट है? एडजेसेंट है. एडजेसेंट है. तो अगर मैं P माइनस 90 को मिडिल पार्ट मानता हूं तो 90 माइनस पी ए वाला पार्ट इसका एडजेसेंट पार्ट हो गया. व्हाट अबाउट एंगल B? इज इट ऑपोजिट टू P माइनस 90 और एडजेसेंट? अपोजिट है. एंगल B इसके ऑपोजिट हो गया. अब देखो मिडिल पार्ट तो हमने ये बना लिया, लेकिन एक पार्ट आ गया एडजेसेंट और दूसरा पार्ट आ गया ऑपोजिट. अब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक एडजेसेंट पार्ट हो और दूसरा ऑपोजिट हो. या तो दोनों के दोनों एडजेसेंट होने चाहिए या दोनों के दोनों ऑपोजिट होने चाहिए.
So we cannot take P minus 90 as our middle part because one will become adjacent, other will become opposite. Same thing happens with 90 minus P also. One part become adjacent, other part becomes opposite. So the only part which can be taken as middle part is Bravo angle. Because जब आप Bravo angle को consider करते हो तो ये दोनों part उसके opposite हो जाते हैं and we can apply the formula. So is it clear now बेटा? बेटा ये चेतन का डाउट था. हाँ जी सर, क्लियर सर. Okay, all right. Okay, so the takeaway from here is that if we have a special spherical triangle, then we can apply the Napier rule, and for applying Napier rule, we need to know any two parts of the triangle other than the 90-degree part. So let us now go back to our PAB triangle, the great circle triangle, and see how can we apply this Napier rule to find the position of the vertex. तो बेटा अपने कैलकुलेटर्स जो है वो निकाल लो, कीप द नोटबुक्स ओपन एंड वी विल बी डूइंग ए कैलकुलेशन नाउ. So let's go back to the video. Complete our calculations. Now we Okay, so बेटा अब ये सवाल है हमारे पास. You can see that on the screen. Calculate the position of vertex of the great circle track between A and B. अब वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एंगल ए और एंगल बी को निकालना पड़ेगा. सो गेट योर कैलकुलेटर्स एंड नोटबुक्स और मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि एंगल ए और एंगल बी क्या आ रहे हैं. एवरीबडी ऑन द जॉब बेटा, निकाल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट राइट, निकाल लो बेटा.
angle A 73 degrees. Okay, beta, exactly. Sir, 73 degrees, 15.9 minutes. Okay, all right. Let me show you. We reinforce our learning through an example wherein we need to calculate the coordinates of the vertex of a great circle track between position A, 10 degrees north, 40 degrees east, and position B, 30 degrees north, 100 degrees east. Now this question for the GC distance initial and final course has already been solved in our video 1. So the PAB triangle, the formation of the PAB triangle and calculation of angle A and B has been done therein. So we'll pick up the values of A and B from there. But before that, let's make the diagram for this case. We have the pole, we have position A, we have position B, meridians of A and B, connected by the GC track from A to B. We have PA has colat of A, PB has colat of B, and angle P as the D-long between A and B. Now, relevant results of solution to this PAB triangle from video 1 are angle A 60 degrees 54.8 minutes and angle B 96 degrees 24.6 minutes. एंगल बी सही है सर, एंगल ए गलत है. दोनों सही आ रहे हैं सर. दोनों ठीक. Okay. So beta, इस case में can you tell me now we have angle A and angle B known to us. Will the vertex be inside the triangle or outside the triangle? Sir, it will be outside the triangle and towards B. Very good. It will be outside the triangle and it will be towards angle B. So we will now make the vertex and we will see how to calculate it using Napier's rule. Now we need to figure out as to where does the vertex lie. Now as one angle is obtuse, the vertex lies outside the track and towards the side of the obtuse angle. So vertex shall lie somewhere on this part of the track. So we can mark a suitable point V denoting the vertex. We can draw its meridian from P the pole, and that meridian shall make an angle of 90 degrees with the GC track at the vertex. Now to solve for the coordinates of the vertex, we can take any of the right angle triangle. There are two right angle triangles formed here. One is PVB, other is PVA. So we can always see which one is easier to solve. In this case, A can be directly used if we use PVA. So for this reason, just for the sake of simplicity,
we have chosen the triangle PVA. So make a cartwheel for the right triangle PVA. Okay, so up to here is clear, beta. The vertex is outside. The angle at the vertex is 90 degrees. And we are now going to solve triangle PAV, Papa Alpha Victor. Yes, sir. Okay. Now, beta, can you tell me in this triangle PAV or PVA, it is a special spherical triangle that we know. इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है. Yes, sir. वेरी गुड. सो एंगल ए पता है और क्या पता है बेटा? Angle P. ये पता है, ये भी So angle P. नहीं बेटा, जो एंगल पी हमें पता है वो तो पापा ब्रेवो अल्फा पी ए भी ट्राइंगल का एंगल पी है. नाउ वी आर So तो कंसीडरिंग. सर ये साइड पता है हमें 50 डिग्री है. राइट. सर हमें पी ए पता है, सर हमें एंगल ए बी ए पता है, दो चीजें पता पी है. बी पता है और एंगल ए पता है सर. करेक्ट. सो वी नो साइड पी ए एंड वी नो एंगल ए. ये दो चीजें हमें पता है. राइट बेटा, एवरीबडी ओके? यस सर. 50 डिग्री और 60 डिग्री. Right. So once we know these two things, we can apply the Napier's rule, correct? Yes, sir. Right. So we can apply the Napier's rule and we can find out, number one, we will find out Papa Victor side. सबसे पहले हम Papa Victor side को ढूंढेंगे. Now, can anyone tell me what will be this Papa Victor side? So vertex latitude, sir. We can calculate vertex latitude. The 90 minus latitude. Very good. It will not be the latitude. It will be 90 minus latitude of vertex beta. Yes, It is sir. the Vertex pole. latitude we can find out with the collat of the vertex. Right. Very good. So once you find PV using Napier's rule, you can find the latitude of the vertex. The second thing which we are going to find out is angle P of this triangle. Angle P. That means the big angle P. Alpha Papa Victor. Now can you tell me what is this angle P beta? Alpha Papa Victor. The difference between the long रहेगा vertex and initial position. That will be the D long, which will be added to the angle B, P degrees length. सर डायरेक्ट Point B निकल long. जाएगा पी ए विच एंगल में तो पूरा ए और बी की पोजीशन से निकाली. बेटा जो एंगल P हमें मिलेगा इस ट्राइंगल में, that is alpha papa victor, it is the D long between initial position and the vertex. Now we know the longitude of initial position 40 degree east. So when you apply the D long, you will get the longitude of the vertex. Right beta, understood? Yes, sir. Okay, very good. Now we are finished Sir, with our. हाँ बोलो बेटा. सर अगर इनिशियल पोजीशन वही जैसे 160 ईस्ट हो और फाइनल पोजीशन 110 वेस्ट दिया हुआ है, तो उस केसेस में सर एंगल पी मतलब हम उसमें जैसे डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना सर, डी लॉन्ग में जैसे हम करते हैं. तो कितने खड़े हो कितने नेचुरली बेटा जो डायरेक्शन है पीएबी ट्रायंगल कैसे बनेगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सबसे पहले तो वो सही बनानी है हमने, उसके बाद ही वर्टेक्स आएगा. हाँ जी सर, ठीक है सर, वो जब क्वेश्चन करेंगे वैसे तो राइट. सो बेटा मैं अब ये आगे वीडियो नहीं चला रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर. आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट. वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर आवर सेशन. So you can now practice the questions of vertex. जो ग्रेट सर्कल की एक्सरसाइज आपने की थी प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक से, वही 6 सवाल जो शुरू के 6 सवाल मैंने आपको करने के लिए बोला था, उन्हीं में वर्टेक्स की कैलकुलेशन भी उन्होंने पूछी हुई है. सो यूजिंग द नेपियर रूल नाउ यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट द वर्टेक्स, पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड. सो ये आपने प्रैक्टिस करना है एज होमवर्क.
Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. Right, beta, right. So next time when we meet, we will we will be familiar with calculation of the vertex that time. So we will see after calculation of the vertex, how do we find out the intermediate positions? So that is what we are going to see in the next lecture. So till then, bye bye, beta. That's all for this session. See you next session. Thank you, sir. Okay, beta. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, beta. Bye.